Welcome back everyone. So we were discussing our first chapter, first unit, right? Living world. So far we have seen the characteristic of living organism, non-defining properties of living organism. Then we have seen taxonomy, and we have seen the scientists, and we have seen the definition. We have seen systematics, and we have seen taxon. We have seen taxonomic hierarchy, and also we have seen binomial nomenclature, right? So ICBN and ICZN. So today we will discuss next topic, taxonomical aids. Okay. Taxonomical aids. Taxonomical aids. So taxonomical aids. It means any particular place, okay, where we can visit and we achieve information about plants and animals and their surroundings. Okay, so any particular place where we can visit, like for example botanical garden, for example zoological park, for example museum, where we can visit and we can achieve certain information regarding plants, animals, based on their habitats, based on their food, okay, and different like structure. So these are all comes under taxonomical aids. Okay, aids means ये क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर प्लेस रहते हैं जहाँ पे हम लोग विजिट करके हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल. ओके, देखो इन बायोलॉजी द प्लांट्स diversity, okay, the plant diversity, we call it as a flora. One thing you remember, the various plant species, जितना भी plant species होते हैं, we call it as a flora, and various animal species we call it as a fauna. That you need to remember. Okay, remember. So हम लोग ऐसे डायरेक्टली प्लांट्स एनिमल्स नहीं बोल के, सो जितने भी प्लांट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्लांट का डाइवर्सिटी जितना भी होते हैं, सो टुगेदर वी कॉल इट एज ए फ्लोरा. जितना भी एनिमल डाइवर्सिटी होते हैं, जितना भी एनिमल स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो वी कॉल इट एज ए फाउना. दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी विल सी कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे जाके हम लोग information ले सकता है about the plants, about the animals, or about even insects also. Okay, so we will discuss one by one. So taxonomical aids. So what is taxonomical aids? A taxonomical aids is a particular place or institute or any place only where we visit and when we gain certain information about the plants, animals. Okay, so we have for example botanical garden. When we visit botanical garden, if you want to gain knowledge about the plant diversity, we go to botanical garden, and then we gain certain knowledge about the plants according to their habitat. Okay, so different kind of information we can gain when we visit botanical garden. जब भी अगर हम लोग को प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग botanical garden में जाके, तो ऐसा पर्टिकुलर प्लेस में जाके बॉटनिकल गार्डन में जाके तो हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्लांट के बारे में और उसका हैबिटेट के बारे में, उसका फ्रूट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग ले सकते हैं अबाउट प्लांट. सो अगर हम लोग को एनिमल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन विजिट टू जू. सो वी हैव अ जू, राइट. सो जू में जाके हम लोग एनिमल्स जितना भी एनिमल्स होते हैं उसका अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग एनिमल्स का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. फॉर इफ़ यू वांट टू सी सम एंडेंजर्ड एनिमल वी कैन गो एंड विजिट एंड सी देम. इफ़ यू वांट टू सी द फूड हैबिटेट ऑफ सर्टेन एनिमल्स वी कैन go and see them. So we can gain knowledge about the animals when we visit zoo. So this all comes under taxonomical aids. And we have museum also where dried specimen are kept. लेकिन म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में स्पेसिमेन जितना भी स्पेसिमेन होता है उसको ड्राइड करके रखा जाता है. इवन इंसेक्ट्स को भी रखा जाता है म्यूजियम में. हाँ, सो हम लोग एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी बोटानिकल गार्डन. पहले तो यू write the taxonomical aid. What is taxonomical aids? A taxonomical aids is a particular place where one can
gain an information where one can visit and gain the information about various flora and fauna. Okay, flora means plant species, plant diversity. जितना भी plant species होते हैं together we call it as a flora. So जितना भी animal species होते हैं सब मिला के diversity animal का जितना भी होता है उसको हम लोग fauna बोलते हैं. So different plants and animals. Okay, so पहले we'll take an example of botanical garden. Botanical garden. So if you want to gain some information about the plant species, if you want to see the endangered species, if you want to see the habitat of plant, if you want to see the fruit that produced by plant, so कोई भी अगर information चाहिए हम लोग को plant के बारे में तो हम लोग क्या कर सकते हैं botanical garden में जाके हम लोग देख सकते हैं. Okay, we can gain knowledge. So we need to know some function of botanical garden. So इसका क्या फ़ायदा होता है botanical garden में जाके? What botanical garden provides us? We need to see that. What botanical garden helps us? In which way? Okay. So we will see one by one. So पहला function we can write that it provides facilities. Botanical garden it provides facilities. Botanical garden means what? Of course plants होंगे उसमें because we are talking about botany, right? Botanical garden. So first function we can say that it provides facility for collection and identification of plant diversity for any taxonomic research. अगर कोई भी plant species के बारे में research करना चाहते हैं तो हम लोग botanical garden में जाके कोई भी अगर कुछ particular plant में research करना चाहते हैं तो वो plant को देख के हम लोग research कर सकते हैं botanical garden में जाके. ठीक है. So first function we can write it provides facilities for collection and identification of certain plant species for biosystematic studies. I hope it is visible. Okay, let me explain again. So first function we can write it provides facilities for collection and identification of certain plant species for biosystematic studies. Okay, so if you want to study on some particular plant species, if you want to do research on some particular plant species, so we can visit to botanical garden. First we observe that plant, we collect that plant, we identify that plant, and we can do our research based on that. Okay, तो हम लोग जाके botanical garden में अगर कोई भी एक particular plant के बारे में अगर research करना चाहते हैं तो हम लोग जाके वो plant को observe कर सकते हैं, उसको collect भी कर सकते हैं और उसको लेके हम लोग research कर सकते हैं जो भी करना हो. ठीक আছে. So সেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ. So প্ৰথম function হ'ল botanical garden. Okay, so next function আমি কি লিখিব পাৰোঁ? It provides. Okay, let me write. Okay, record of local flora for monographic work. It provides record of local flora for monographic work. आमे botanical garden की होय actually आमे preserve करा है plants बोर. So like endangered plant we used to preserve and we used to collect. Okay, तो botanical garden में क्या होता है हम लोग जो भी plant होता है जो endangered species वाला होता है नहीं तो extinct हो गया वो plant जो ये सब हम लोग preserve करके वहाँ में preserve करते हैं botanical garden में for our any kind of research work और कोई भी अगर काम हो तो हम लोग वो plants को देख के हम लोग अपना काम कर सकते हैं. ठीक है. So what it do? Our second definition, it provides records of local flora or for monographic work. So they store records of local plant species. Okay, जितना भी local plant species होते हैं उसको वो record
में कलेक्ट करके रखते हैं. ओके, दे प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल फ्लोरा. कोई भी अगर काम हो उसके लोकल प्लांट, सो दे यूज टू कलेक्ट देयर रिकॉर्ड्स. सो दैट इज आवर second definition. Okay, third definition we can write. The supply, seeds and material for botanical study. So in botanical garden, different types of plant species will be there. Okay, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লান এইবোৰ থাকিব তাত. সো সেই প্লানখিনি কি কয়, সিডস প্ৰভাইড কৰা হয়. ওকে, প্লানখিনি কি কৰে, সিডস প্ৰভাইড কৰে. সো সেইখিনি সিডস বা যি মেটেৰিয়েল হওক, সিডসে হওক বা ফ্ৰুটছ হওক, তাৰ লিফখিনি হওক, সেইখিনি চাই পেলাই আমি আমাৰ যদি যিকোনো কাম থাকে, ৰিচাৰ্চ কাম থাকে ফৰ বটানিকেল পিপল, যদি কাম থাকে কিবা ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া হয়, সেইখিনি চাই পেলাই আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰি. ठीक है सर. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन बोटानिकल गार्डन बहुत सारे प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज होते हैं, प्रिजर्व करके रखा जाता है. ओके, इन ए प्रोटेक्टेड एरिया होता है. हाँ, इसे एनक्लोज एरिया जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज अपना सीड्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसका लीफ अलग अलग होते हैं, उसका स्टेम अलग होता है. सो ये सब के बारे में हम लोग उसको देख के पढ़ाई किया जा सकता है. ठीक है, फॉर बोटानिकल पीपल, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अ प्लांट, like for if you do research work in a plant, so we can do that. Okay, so in the botanical garden, so different plants will provide different seeds, different fruits. So based on that, if you want to do some research work, so again we can do that by seeing on that seeds and materials. So they supply different types of seeds, materials. It means that fruits, leaves, stem or anything. So different plant has different characters, right? So based on that we can do our research work. All right, so that is our third function. One more function let me give you. I'll give you four. Say one thing you need to know, that if the question asks write a function of botanical garden, if it is of 2 marks, okay, if it is of 2 marks, at least try to write 3 points, not less than 3, not more than 4. Okay, if it is of 2 marks, try to write at least 3 points, but not less than 3. You can write maximum up to 4 points, but not more than 4. But the question, if the question comes, it will come for 2 marks only. Function of botanical garden for 2 marks. All right. So remember that thing. Okay. If you write 3 points, then it is sure that you will get full marks. If you write 2 points, so you have 50% chances to get 2 marks. Okay. So supply seeds and material for botanical. One important function I'll give you. It provides means of ex situ conservation strategies. It provides a means of ex situ conservation strategies. What is ex situ? देखो, इन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर है 2nd ईयर में, फिर भी या मैं बता देता हूँ. तो एक्स सिटू और इन सिटू होते हैं. ठीक है, एक तो एक्स सिटू, एक तो इन सिटू होते हैं. पहले एक्स सिटू को देखते हैं. एक्स सिटू मतलब कोई भी अगर काम या प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करते हैं रूम का बाहर में, ओके, लेबोरेटरी का बाहर में, अगर कोई भी इन ए लार्ज एरिया अगर कोई भी प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं या कंजर्वेशन का कोई भी काम करते हैं रूम का बाहर में, इन ए लार्ज एरिया में, बड़ा सा एरिया में, तो उसको हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. अंडरस्टूड. कोई भी कंजर्वेशन अगर रूम का बाहर में करते हैं बड़ा एरिया में, लार्ज सरफेस एरिया में, तो उसको हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं. पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था. जब भी वर्ड एक्स मिलते हैं कोई भी वर्ड का पहले इन बायोलॉजी,
इट ऑलवेज मीन्स समथिंग दैट इज़ इन आउटसाइड टेकिंग प्लेस, बाहर में कुछ हो रहा है, ठीक है, बाहर, एक्स मीन्स बाहर, सिर्फ याद रखना। अगर इन है तो इनसाइड, समथिंग इट इज़ इन इनसाइड, ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स कोई भी अगर प्रिजर्वेशन हो, काम हो, रिसर्च हो, कंजर्वेशन हो, कोई भी काम बाहर में हो रहा है, बाहर में करते हैं इन ए लार्ज सरफेस एरिया, उसको ही हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। नाउ इन सिटू मीन्स if any work is done inside a laboratory, inside a home, inside a house, okay, inside a room, we call it as a in situ. अगर कोई भी रिसर्च का काम हो, कंजर्वेशन का काम हो, कोई भी काम हो, अगर रूम का अंदर में करते हैं, लेबोरेटरी में स्पेशली अगर रूम का अंदर में, घर का अंदर में करते हैं कोई भी कंजर्वेशन का काम, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो बोटानिकल गार्डन तो 12 सरफेस एरिया होते हैं ना, एक गार्डन जैसा होता है, वो तो बाहर में होते हैं, रूम का बाहर, तो हम लोग इसलिए इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। बोटानिकल गार्डन हो गया, लाइक जूलॉजिकल पार्क हो गया, ओके, नेशनल पार्क, ये सब कहाँ आते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन में। Understood? So that you remember. So it provides a means of ex situ conservation strategy. So botanical garden is nothing but it is the conservation of different plant species. वहाँ में क्या होता है? Plant species को conserve किया जाता है, preserve किया जाता है, like endangered plant हो गया, critically endangered plant हो गया, या कोई भी extinct होने वाला plant, वो सबको क्या करते हैं? एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो बाद में गायब ना हो जाए और हम लोग वेरियस स्टडी कर सके, उसके बारे में रिसर्च कर सके, इफ़ समवन वांट्स टू डू। सो दैट इज़ द कंजर्वेशन एक्चुअली। बॉटनिकल गार्डन एक एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को कंजर्व, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ओके, फॉर आवर वेरियस वर्क। सो दिस आर द वर्क, ओके, सो वी हैव स्टडी, ओके, बुझी पाइছা। सो एक्स सिटू কি হয়, যিকোনো আমি কাম বা ৰিচাৰ্চ যদি কৰোঁ বাহিৰৰ, ঘৰৰ বাহিৰত, সো ডাঙৰ এটা এৰিয়াত, সেইখিনিক আমি एक्स सिटू कंजर्वेशन বুলি কোৱা হয়। আৰু ইন সিটু মানে কি হ'ল, যিকোনো কাম আমি ৰিচাৰ্চ কাম হওক বা কনজাৰ্ভেশ্যন, যিকোনো আৰু আমাৰ কাম যদি ৰুমৰ ভিতৰত কৰা হয়, ইন এ লেবৰেটৰীত কৰা হয়, তো সেইখিনিক আমি ইন সিটু বুলি কওঁ, ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা। সো বটানি কি কৰে, কি প্ৰভাইড কৰে আমাক, সি এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰে। কনজাৰ্ভেশ্যন মানে কি, আমি কনজাৰ্ভ কৰোঁ, আমি প্লাণ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাণ্টবোৰ আমি তাত কি কৰোঁ, কনজাৰ্ভ কৰোঁ। কিয় কি আমি যদি আমাৰ ৰিচাৰ্চ কাম থাকে বা যিকোনো কাম থাকে, আমি তাতে গৈ পেলাই আমি পঢ়িব পাৰি, ওকে, কৰিব পাৰি। সো সেইখিনি ফাংচন। সো দিছ আৰ দ্য ফাংচন অফ বটানিকেল গাৰ্ডেন। সো আইল গিভ ইউ 4 points that will be enough, but if you want more, if you feel like you want more, you can go through by yourself NCERT book, all right. If the question asks, it will ask for 2 marks. So for 2 marks, you need to write at least 3 points. If you write 3 points, you can write till 4 points. Okay, 4 points तक लिख सकते हो. Then if you write 4 points, you will definitely you will surely get 2 marks. 3 points लिखने से भी 2 marks मिलेंगे, लेकिन अगर 2 points ही लिखते हो तो चांसेस कम होते हैं 2 mark मिलना। ये डिपेंड करेगा टीचर का मूड पे। So it's better not to take risk. So always remember, whenever question asks for 2 mark, at least try to write 3 point. Now तुम लोग का आंसर जब भी लिखते हो ना, ऐसा point wise में लिखने से ज़्यादा effective होता है। It looks very simple and effective. Okay, you will get full marks. No need to write in a continuous center. ऐसा history जैसा लिखने की ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी में। ऐसा मत सोचो कि 3 marks है, हमको 1, 2, 3 पेज लिखना पड़ेगा आंसर, ऐसा नहीं है साइंस में, ठीक है। So your notes should be simple but effective and should be appropriate. Then only you will get full mark. So I'll give you notes in that way only. Okay, point wise में. So you can write like that. You will get marks. So okay. So try to make it simple. Try to make your notes simple but effective. Okay. We need to study smart. तब भी जाके marks मिलेगा. And it will help you to understand in easiest way. So botanical garden, these are the function of botanical garden, and we are discussing taxonomical aids. Now we will take some examples of botanical garden. So some examples of botanical garden. कुछ example देखते हैं botanical garden के बारे में. Okay, so India में देखते हैं.
सो इंडिया में सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या है? सो वी नीड टू नो दैट. सो कैन एनीवन टेल मी इफ what is the name of our first Indian botanical garden and where it is located? It is located in Howrah, that is in Kolkata. Okay, Indian Botanical Garden. We are talking about Indian. Okay, so Indian Botanical Garden. This is our first botanical garden in India, and it is the largest botanical garden in India. Indian Botanical Garden. It is located in Howrah, that is in Kolkata. Okay, but this is a old name. ये पुराना नाम है. Now the name has been changed. Okay, so the old name is also important, you need to remember. So the old name is Indian Botanical Garden and it is located in Kolkata, that is in Howrah. Okay, Howrah में located है, कोलकाता में, कोलकाता state में. So that is, remember, that is our first Indian Botanical Garden and it is the largest Indian Botanical Garden, largest. But that is the old name. The new name, जो उसका नया नाम है, पुराना नाम भी इम्पोर्टेंट है, नया नाम भी इम्पोर्टेंट है, but the name has been changed now. Okay, the new name one is known as Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden. So this is his new name, Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden. So remember, it is new name, it is the old name. Okay, there one more Indian Botanical Garden we can write. National Botanical. मैं इंडिया का बोटेनिकल गार्डन का एग्जांपल दे रहा हूँ. नेशनल बोटेनिकल गार्डन. It is located in Lucknow. Okay, so remember, कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं तो एंट्रेंस में तो इम्पोर्टेंट है ही है. सो एंट्रेंस में कैसे पूछते हैं? नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? ओके, लखनऊ. सो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन? Where it is located, right? Okay, these two are the important botanical garden in India. So one more important botanical garden, which is the largest botanical garden in world? Can someone tell me which is the largest botanical garden in world? Yes, of course, I can hear you even if you say answer. So yeah, the largest botanical garden in world is known as Royal Botanical Garden. This is the largest botanical garden in world. It is the largest in world. दुनिया में सबसे बड़ा botanical garden, उसका नाम है रॉयल बोटानिकल गार्डन. कहाँ पे है ये? It is located in क्यू. जगह का नाम है क्यू. कंट्री का नाम इंग्लैंड. ओके, इट इज लोकेटेड इन इंग्लैंड. द नेम ऑफ द प्लेस इज नोन एज क्यू, KEW. easy to remember, Royal Botanical Garden. So these are the important example of botanical garden you need to remember. All right, so we have discussed botanical garden. Next we will discuss zoological parks. Zoological parks. Zoological parks. So zoology means what? Animal, of course. So just like same as botany only, the function पहले देखेंगे और some example देखेंगे. So function तो same ही रहेगा, सिर्फ difference क्या होंगे इसमें? इसमें animals होंगे, उसमें plants रहेंगे.
Okay, so zoological parks is a particular place, enclosed area, okay, जहाँ पे animals को रखा जाता है. Different species of animals are kept under human care. Okay, so endangered species को रखा जाता है, critically endangered होते हैं, vulnerable animals होता है, ये सब सेकेंड ईयर में है, वो सब देखेंगे. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में एक्सटिंक्ट एनिमल को भी रखा जाता है और उसको क्या क्या इंटरब्रीड किया जाता है वहाँ में. ओके, ब्रीडिंग किया जाता है एनिमल्स. तो हम लोग अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, इफ़ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, सो वी कैन विजिट ए जूलॉजिकल पार्क. We can observe animals and we can gain knowledge of different types of animal species. उसका एनिमल्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं. ओके, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका फूड हैबिट देख सकते हैं, क्या क्या खाते हैं वो लोग, कैसे सोते हैं. ओके, so anything their nature, so we can gain that knowledge by visiting zoological park. So zoology का कोई भी इंसान अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग जूलॉजिकल पार्क में जाके कोई भी एक एनिमल के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग जाके वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स, बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट्स के बारे में रिसर्च करते हैं. जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जूलॉजी के एनिमल्स के बारे में रिसर्च किया जाता है. तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, इट इज़ ए एनक्लोज एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया होता है वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर. ओके, where different types of animals are kept under human care. Okay, so एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर. तो वही है जूलॉजिकल पार्क. सो फंक्शन क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जूलॉजिकल पार्क? इट प्रोवाइड्स कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्वेशन है, हाँ, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. इट प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड. से एंडेंजर्ड मीन कोई भी एनिमल अगर ख़त्म होने का चांसेस में है, दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब एकदम ख़त्म हो गया. ओके, सो एनी एनिमल्स विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट दे आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड एनिमल. फॉर एग्जांपल राइनो इज ए एंडेंजर्ड एनिमल. गोल्डन लंगूर दे आर एंडेंजर्ड एनिमल. वो दे आर एंडेंजर्ड मतलब वो एक्सटिंक्ट होने का चांसेस में है, ख़त्म होने वाला है वो एनिमल. दैट्स वाई टाइगर इज ऑल्सो एंडेंजर्ड एनिमल. Because people are so evil that animals are unable to live in this planet. Okay, nowadays provides conservation of endangered, not all but some of, provides conservation of endangered animals. Okay, endangered animals को conserve किया जाता है, इसको क्या करते हैं, ब्रीडिंग किया जाता है. allows breeding. ओके, ब्रीडिंग, BREEDING. ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है. ओके, प्लीज़ एक्सक्यूज माई बैड हैंड राइटिंग. सो प्रोवाइड्स कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, अलाउस ब्रीडिंग. उसको ब्रीडिंग किया जाता है ताकि उसका पॉपुलेशन फिर से बढ़े. ओके, एंडेंजर्ड से फिर नॉर्मल कंडीशन में आए, इसलिए उसको इंटरब्रीड किया जाता है. एंड देन provides conservation and endangered animals, allows interbreeding. Okay, ये हो गया our second function. Third function, it provides recreation. It provides recreation. Okay, and allows large number, NO बोल के मत लिख देना, तुम लोग सेंटेंस लिखना. and allows large number of tourists to visit into zoological
पार्क सो जूलॉजिकल पार्क रिक्रिएशन में हेल्प करते हैं, रिक्रिएट करते हैं नेचर को। ओके नेचर मतलब खाली प्लेन्स को ही नेचर नहीं बोलते हैं। ओके एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, ह्यूमन, एवरीथिंग नेचर। And a large number of tourists to visit into the zoological park. So tourists attract करते हैं वहाँ में. So they somehow they develops economy also. So that is our zoological park. The fourth one, they also provides means of ex situ conservation. So zoological park is also a ex situ conservation strategies. So we have just discussed what is ex situ, right? Okay. So these are the function of zoological park. So one example I'll give you. The largest zoological park in world. Name the largest zoological park in the world. The name of the largest zoological park is known as Kruger or Kruger. Okay, Kruger zoological park का नाम. Where it is located? Well, it is. I hope you already have seen this in National Geography or Discovery Channel. It is located in South Africa, of course. So it is Kruger. It is located in South Africa. It's the largest zoological park in the world. Okay. So in Assam we have zoo in Guwahati. When you come to this college, you will find that, you will see that zoo. Okay, so this is the zoological park function and example. So next we will see museum and we will see some different topic.